Hi, good afternoon, good evening, everyone, and welcome to BYJU'S Exam Prep. How are you guys doing today? I hope you can hear and see me clearly, everybody. Good evening. I hope everyone is doing really good. I hope you've been working hard. I hope you've been solving questions, and I hope you have a question, you have a doubt about what's going to be coming in grammar. वो important topics बता दो मैम जिसको करना जरूरी है, जिससे maximum questions आएंगे अगर grammar आता है तो. So, good evening, everyone. All right. So, yes, I hope I'm clearly audible and visible. अजेंडा क्या होगा आज के सेशन का? देखो, ग्रामर इंटरमिटेंटली एग्जामिनेशन में आती रहती है. सैंपल पेपर में भी आपने ग्रामर के क्वेश्चंस देखे हैं कई बार, और 2-3 मार्क्स की ग्रामर शायद एक्चुअल पेपर 2024 और 2025 में भी आ सकती है. सो इफ यू लुक एट द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर, हाँ, ग्रामर के क्वेश्चंस आ सकते हैं बेस्ड ऑन पैसेजेस. ना अगर बेस्ड ऑन पैसेजेस ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, in this session I'm going to be discussing what are the important topics that you should be doing if you're preparing for any of these law entrance examinations. So I'll be telling you those important topics. एक sample question दूंगी हर topic का. Good evening, good evening. Yes, AILT में भी दोनों में. Critique has a little bit of a negative connotation, but आप उसको बहुत strongly categorize नहीं कर सकते हो negative में दिया. 1 second guys. या ऑल राइट. सो उसका बहुत स्ट्रांगली नहीं कैटेगराइज कर सकते एक नेगेटिव वर्ड में. गुड इवनिंग एवरीवन. तो बात करना स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स की. सबसे पहले देखते हैं कितने ग्रामर क्वेश्चन आ सकते हैं एक्चुअल एग्जामिनेशन में. देखो, मोस्टली अगर आप बात करो क्लैट, AILET और SLAT, ये RC डोमिनेटेड एग्जामिनेशंस हैं. बट इसका मतलब ये नहीं कि इनमें ग्रामर नहीं आ सकते. इनमें RC बेस्ड ग्रामर क्वेश्चंस आ सकते हैं. यू हैव सीन देम कमिंग इंटरमिटेडली द लास्ट फ्यू इयर्स पेपर्स. यू हैव आल्सो सीन देम कमिंग इन द सैंपल पेपर्स. और पता है क्या होता है बच्चे, ग्रामर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना RC है, पर ग्रामर टाइम भी तो कम लेता है ना. तो अगर आप एक महीना अभी भी अगर प्रैक्टिस कर लोगे थोड़ी सी, लाइक 15 मिनट्स अ डे, आप बहुत इजीली ग्रामर कवर अप कर सकते हो. तो वो जो 2 से 3 मार्क्स से 4 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है ना, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ग्रामर के. आप बाद में रिग्रेट नहीं करोगे कि ये मैंने नहीं किया, मुझे कर लेना चाहिए था. ये 3 मार्क्स तो बिल्कुल सिटर क्वेश्चन थे, 1 लाइनर क्वेश्चन थे, 10 सेकंड में आंसर हो जाते, है ना. तो इसलिए ग्रामर कर लेना चाहिए. अभी भी आपके पास 2 महीने बचे हैं. अगर 1 महीना भी कर लोगे ना ग्रामर, यू विल बी अ मास्टर ऑफ दैट. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जिसमें आप को ग्रामर के क्वेश्चंस मिल सकते हैं. सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ. जेनेरिक पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता होना बहुत जरूरी है. ठीक है मैम, ग्रामर, हाँ ऑफ कोर्स, यस मनो, दैट्स राइट. सो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक्स, जैसे अगर मैंने वर्ड एडजेक्टिव यूज किया तो एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, नाउन क्या है, उनका आइडेंटिफिकेशन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज बहुत सारे मॉक्स में आपने देखे होंगे एक वर्ड हाईलाइटेड है और पूछा है कि दिस वर्ड बिलोंग्स टू दिस पार्ट ऑफ स्पीच एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज दिस. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी क्वेश्चन. देखे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने, है ना. MHCT में देखो कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता एंड्रॉइड MHCT का. इट कीप्स चेंजिंग. तो थोड़ी ग्रामर वहां भी आ सकती है. ठीक है. It has a better chance of coming in AILET. Yeah, of course, more chances of coming in AILET. चलेगा गरिमा, no problem with that. ठीक है. So back to it. Identification of एक वर्ड और उसका पार्ट ऑफ स्पीच बहुत जरूरी है. आपका सबसे बेसिक फंडामेंटल होता है. और यार एक बात ऑनेस्टली बताओ, स्कूल में आपके टीचर्स ने कितनी बार आपसे ये बोला था कि ये कर लो, ये आएगा एग्जाम पे. अब देखो स्कूल ओवर होने को आ गया है, आपकी क्लैट की टीचर भी बोल रही है कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा एग्जामिनेशन में. तो फर्स्ट सिट विद अ ग्रामर बुक. यू कैन वॉच योर क्लास वीडियोस, एसिंक वीडियोस, किसी से भी देख के बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं और उनके आइडेंटिफिकेशन. जैसे नाउन है तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं नाउन, प्रोनाउन है तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं प्रोनाउन, एडजेक्टिव है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इंटरजेक्शन है तो क्या होता है इंटरजेक्शन, कैसे आइडेंटिफाई. आइडेंटिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स द फर्स्ट थिंग. ठीक है. सेकेंड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसके अलावा इंपॉर्टेंट है, जो आपको करना जरूरी है. द फर्स्ट वन बिकम्स सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट.
गिन के कुछ 7 से 8 रूल्स हैं, वो रूल्स करने। और अगर देखो ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, बहुत हाई, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसपे हमने स्कूल में बहुत अटेंशन दिया नहीं है और हम स्टूपिड से मिस्टेक्स करते थे यहाँ। तो ये 7 से 8 रूल्स, इफ यू डू देम, you will be able to get these subject verb agreement questions correctly. You have individual classes happening in your batches in subject verb agreement. You have asynchronous videos. Otherwise, if you're not enrolled with us, you can do it from Ren and Martin. Or there are topic tests in our app as well. You can do topic test on subject verb agreement as well. So basic theory clear करके topic test दे दो, ठीक है? फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे, क्योंकि फिगर्स ऑफ स्पीच कुछ ग्रामर बुक्स उसको वोकैबुलरी मानती है और कुछ ग्रामर बुक्स उसको दे कंसिडर टू बी ग्रामर। सो इसलिए फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे, ठीक है? सो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, इज आएगा क्या रहेगा बताना, सिंपल एग्जाम्पल है। द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज आर वेटिंग फॉर देयर टीचर। क्या आंसर होगा इधर एवरीवन? The group of students is are waiting for the teacher. Answer everyone? Yeah, it's going to be is, because it's referring to a group and not students as plural. So since it is referring to a group, it is singular, and thus the correct answer is going to be is. So I think apart from parts of speech, we have subject verb agreement. That's an important topic that should be done. Go ahead, touch upon that. It's important. Second, टेंसेस। देखो यहां ना मैंने आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया है, बट इतना आसान आएगा नहीं। ही हैज हैड गॉन टू द मार्केट यस्टरडे। अब अगर यस्टरडे है तो हैड लगना चाहिए, है ना? तो क्योंकि ये पास्ट टेंस है, बट इतना सिंपल आएगा नहीं, आएगा तो ट्रिकी आएगा। फॉर एग्जाम्पल, माई ट्रेन विल लीव at 9 p.m. on 21st October. कोई एरर दिख रहा है यहाँ किसी को? Can you identify an error here? My train will leave at 9 p.m. on 21st of October. Can you find an error here? Let me see if you can. Okay. On the 21st of October. हाँ, that of course is true. Will be leaving, ठीक है? Tenses नहीं बच्चे, यहाँ correct tense होना चाहिए। My train leaves at 9 p.m. on the 21st of October. The आएगा, that's correct. Not will be leaving, no, leaves. Now I'll tell you why leaves. Because if you have a fixed action that happens at one point of time in future, which is pre-decided, you have to take a present simple tense. भूल गए rules सब बच्चे? So time to revisit the rules of grammar. देखो basic rules बहुत आसान है. Like the example given here, he has had gone. ये तो तुम कर ही लोगे, he had gone होना चाहिए. यहाँ तो कुछ भी tricky नहीं है. Tricky वाले exceptions करना जरूरी है ना. और if you remember, I taught you this in the class, that maximum exceptions come under simple present tense. है ना? याद है कुछ कुछ किसी को? तो simple present tense पे थोड़ा सा ध्यान दे दोगे, कुछ 2-3 और tenses इधर उधर, I think आप लोगों ने you've lost touch with grammar altogether. Pick up grammar and उसकी topic test individually solve करना start कर दो. जैसे tenses को 2 दिन लगा के tenses solve कर लो, 1 दिन में भी हो जाएगा. And then उसी next day, very next day, take the topic test that belongs to tenses. ठीक है? Yes. Okay. Yeah, you need to revisit that, correct. All right, so tense is very, very important. There are some exceptions. Tenses के साथ साथ conditionals कर लेना. Because conditionals also are a lot misused. बहुत common errors करते हैं लोग और ये errors पे ही questions आते हैं. So do tenses plus conditionals. That's number 2. Number 3, but before that, if you haven't enrolled yourself with any of our programs yet, you can still do that by availing a 3-day free trial on our app. So, and that's for free. So go ahead, register yourself with your phone number for a 3-day free trial. The details, the link is there under my video in the description box. Okay, let's talk about pronouns. Example देती हूँ मैं आपको, ठीक है?
कुछ एरर दिख रहा है? We enjoyed at the party. Anyone? Can you find an error here? Let me see if you can. We enjoyed at the party. Correct है ना sentence तो? चलो ये वाला example छोड़ो. इसमें what should the correct answer be? Each of the girls took her or their books. Okay. At is not supposed to be used. ठीक है. But if at is there, आप at को remove नहीं करते हो, आप एक reflexive pronoun add करते हो यहाँ. And that is we enjoyed ourselves at the party. ठीक है. You add a reflexive pronoun. You don't omit at. या तो either way you be correct कर सकते हो. या तो at हटा दो or you add a reflexive pronoun. ठीक है. Here each of the girls took her or their books. Okay. The correct answer is her. Exactly. Because each means singular. As subject verb agreement, as subject pronoun agreement as well. So the subject each is singular. It will be followed by a singular pronoun and a singular verb. So each of the girls took her book or books. Alright. So pronouns में बहुत सारे ऐसे rules आते हैं exceptional, especially I और me वाले. इस पे special focus करना. I hope you remember, like she is taller than I or me. क्या लगाओगे? She is taller than I or me. What will you use here? Let me see if you can identify that. She is taller than I or me. आंसर करो बच्चे. Confused? Me? No one's answering. Why? Oh, because you aren't. Either I'm unable to see your chat or maybe no one's answering. Oh, let me refresh the page. Now I can see. ठीक है, now I can. Yes, I am. Yes, now I can see your chat. Thank you. The correct answer is I. So, she's taller than I or I am. Commonly लोग me लगा देते हैं, वो गलत है. You remember this rule. So do pronouns. Next one. Articles. Take this example. A and the. The use करोगे कि no article use करोगे? Let me see if you remember this rule. Yes, correct. I am लगेगा previous sentence में. Here, I'm going to the school to study or no article school to study? क्या article लगेगा इधर? No article? Okay. Yes, it's going to be no article. Absolutely. Because when you're going to school for its regular purpose, that's studying, you use no article. So, the correct answer is, I'm going to school to study, but I'm going to the school to meet the principal. Remember, articles, the usage of a and the. इस पे भी topic tests हैं ऐप में. You can quickly do a revision of articles. Barely 1 घंटा लगेगा revise करके और topic test कर लोगे तो revision हो जाएगा अच्छे से. ठीक है? Next, before I tell you the next topic, we've launched a test series for CLAT 2024 aspirants, and the test series comes with 25 CLAT based marks, 15 AILET, and 15 other law entrance test based marks as well. So, and since you do not have a lot of time left, we highly recommend you take a lot of tests. Everyone would. So rush up, enroll yourself for the test series. The link is there under my video in the description box. Yes, I'm going to prison because you committed a crime. Okay, so here it starts raining heavily in Bangalore. The quintessential Bangalore evening rainfall.
Prepositions. We just did that in some of your batches. जो बच्चे भी chat देख रहे हैं, मेरा कुछ बच्चों के batches में अभी ये prepositions हुआ ही है recently. तो good time to take the topic test ना. Say he is good on playing, at playing the piano. It's at. So you are good at something, not good on something. है ना? The correct answer is at. So usage of on, at, over, above, under, beneath, inside, outside, ये सारे prepositions correct usage. Specifically जहाँ rules होते हैं, है ना, वो रूल्स वाले, जैसे इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर के साथ में टू लगता है हमेशा, वो बेसिक वाले रूल्स याद कर लेना, ठीक है। देन वी हैव कंजंक्शंस। कंजंक्शंस में ये सिर्फ 10 मिनट का टॉपिक है, बिकॉज देयर आर ओनली सिंपल कंजंक्शंस। यूजुअली पेयर्स ऑफ कंजंक्शंस पे आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। इस एग्जाम्पल को देखो, शी नॉट ओनली लाइक्स टी बट कॉफी, या she not only likes tea and coffee. What will you use? एक और एग्जाम्पल देती हूँ। Hardly had she reached the station when, then, than the train left. ये बताइए। हाँ, यहां आएगा बट, नॉट ओनली कम्स विद बट और बट ऑल्सो, दोनों करेक्ट होता है। यहां सेंटेंस है हार्डली हैड शी रीच द स्टेशन व्हेन, देन, दैन द ट्रेन लेफ्ट। यस, दैट्स करेक्ट प्रांजलि। एवरीवन, just a minute. Okay, so then, than, when, it comes with when. And no sooner comes with than. No sooner had she reached the station than the train left. Then नहीं use होगा कहीं भी. So no sooner comes with than, hardly comes with when. Rule याद कर लेना, correct. ठीक है? All right, so that's about conjunctions. Barely 10 मिनट का टॉपिक है, easily cover up कर लोगे, revise कर लो इसको. Then we have modifiers. Now this is something our school teachers never taught us. ठीक है? And but ये कोई rocket science नहीं है. It's basically application of adjectives and adverbs in the correct manner. इस सेंटेंस को करेक्ट करके बताओ मुझे। It has an error, modifier का। नहीं बच्चे, than, गौरी, than। THAN, ठीक है? Okay, one error is were. Any other error? क्योंकि आप यहां कंडीशनल लगा रहे हो, आप वर्ड लगाओगे, ठीक है? Any other error? The usage of almost is incorrect. It's a modifier which is a misplaced one. देखो थोड़ा ध्यान से एक बार। He almost drove or he drove almost, है ना? It's a misplaced modifier. Like I almost reached office. I reached office almost on time. Almost का positioning correct word के साथ होना चाहिए. It's a misplaced modifier. It should be he drove almost as if he were in a race. Correct. It's a misplaced modifier. So you better find errors on misplaced and dangling modifiers. Dangling modifiers याद है? Missing subject most of the cases. तो modifiers एक बार revisit कर लेना. Misplaced, dangling का squinting भी कर सकते हो, but misplaced और dangling कर लोगे उतना भी बहुत है आपके लिए. And then we have one very common topic. Before that, we have launched a new comprehensive course for CLAT 2024 aspirants. So see us in the classroom very, very soon. What are you waiting for? We do not have a lot of time left. The number of our counselors is right here. Alternatively, the link is there under my video in the description box that you can access to enroll yourself.
And the last topic, parallelism. सबसे आसान sentence. एक बार try करो, everyone. Yeah, yet purpose is to make you realize that you've been missing out on grammar. It would barely take you a few days, but you'll be able to do all of that in a jiffy and gain those marks. है ना? So, here, an error of parallelism. She enjoys swimming, to run and dancing. So it should be to running nahi bachche Gauri. You are mixing gerunds and infinitives. Either it should be only running or it should be to run. To cannot come with ing. Okay? So either it should be to run. So the correct sentence could be made in two ways. Enjoys to swim, to run and to dance. Or swimming, running and dancing. So या तो सब में ing लगाओ, नहीं तो सब में से ing remove करके make them infinitives as to. All right? So that's the last topic that I think is very important. But don't forget to do identification of parts of speech. ठीक है? Now somebody asked me, ma'am, figures of speech. देखो figures of speech तो सबसे important topic है ही, but क्योंकि बहुत सारे बुक्स उसको vocabulary मानते हैं और बहुत सारे बुक्स उसको grammar मानते हैं, तो एक ambiguity हमेशा आती है when you do parts of figures of speech. But if you ask me if figures of speech is important, it's the most important out of all. There are very, very high chances you get 3 to 4 to 5 marks questions on figures of speech. एक part हो चुका है figures of speech का on YouTube. The next part is happening this Friday at 4 p.m. Don't miss out on that. Part 2 on figures of speech will be done on YouTube channel with more detailed ones, tricky ones. ठीक है? Now error tests देखो बच्चे, we're doing topics that are important. Error tests are basically a combination of all of these grammatical errors that you make. So there the examiner will not tell you यहाँ parallelism का error ढूंढो या modifiers का error ढूंढो. Once you're done with these individual topics, that's when you have to do error spotting and sentence correction type questions. Like one sentence broken into 4 parts, which part has an error? Or one sentence rewritten into 4 ways. You have to identify which one is correctly written. Waha, it's a mixture of all the topics that we have discussed today. So ultimately you have to reach that level only. Okay? एक क्लास हो चुकी गरिमा last week. देख लो एक recorded है but batch में नहीं हुई अभी. वो होगी. ठीक है? So everyone, we've launched a new batch for CLAT 25 aspirants as well. If you're targeting CLAT 2025 CS in the batches very, very soon, the link is there under my video in the description box. And we have our the most popular revision class coming back. Our marathon, 6-hour non-stop marathon is going to be happening on this Saturday. Don't miss out on that. Book a date with us this Saturday, everyone. Timings will be disclosed very soon. अच्छा एक बात बताओ, ये mock क्यों नहीं लिया अभी तक? Everyone, take the mock as soon as possible. I mean, what are you waiting for? The window will close on 1st of October. You don't have days left, barely 5. Do it right away, okay? Mock le lo jaldi se. It's important for you. It's free of cost. Anyone and everyone can take it. Follow us on our social media handles, Instagram, Facebook, Telegram, our app on Google Play. And make sure you subscribe to our YouTube channel as well. That's going to be all for today, everyone. Have a very good evening. God bless you.